cycling. Okay, in previous video we people have seen types of nutrient cycling, that is your gaseous and your sedimentary nutrient cycling. Okay, difference between two we people very well know. Okay, now dear students, we are going to understand components of nutrient cycling. Okay, if I am talking about components of nutrient cycling, right, then this nutrient cycle have three component. ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, इट इज हैविंग थ्री कंपोनेंट्स. एम आई क्लियर? ओके, थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज इनपुट, आउटपुट एंड इंटरनल साइक्लिंग. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट, सेकेंड कंपोनेंट इज आउटपुट एंड थर्ड कंपोनेंट इज internal cycling. Are you people getting my point? Yes. Now we are going to discuss all these three components one by one. We are going to discuss all these three components one by one. Okay. So first we are starting with input of nutrients. Am I clear? Okay, dear students, if I am talking about input of nutrients, right? If I am talking about input of nutrients, then this input is from some external source which gets stored in an ecosystem for biological use. Am I clear? So if I am talking about input of nutrient, then it occurs from external source. It occurs from external source. Okay, and this gets stored. ये यहाँ पे store हो जाता है. Gets stored in ecosystem. It gets stored in ecosystem. किसके लिए? For biological use. For biological use. Okay, अगर आप input की बात कर रहे हो, right, then this input of nutrients can be in four forms. Can be in four forms. Number one, which I am writing, is wet deposition. Okay, wet deposition occurs by means of rainfall. It occurs by means of rainfall. ठीक है. Then comes your second one I am going to write is your dry deposition in form of dust fall. In form of dust fall. In the sense, dear students, I am talking about during the process of mining in industry, dust is released and this dust settle down. So this can be a source of nutrient. Okay. Then point C is your nitrification. Okay. Nitrification, we very well know what is the process of nitrification, whereby atmospheric nitrogen gets fixed in soil, right? And one more source is your weathering of rocks, है ना? Weathering of rocks. Dear students, so these are your four inputs: wet deposition, dry deposition, nitrification and weathering of rocks. Rather than nitrification, I should write nitrogen fixation. That will be a more suitable word. ठीक है? Nitrogen fixation. Okay, nitrogen fixation by whom? By nitrogen fixing. Nitrogen fixing. To be more specific, I am writing over here bacteria, or I can say organism, or I can say organism. Am I clear? Okay, dear students, the process we will be discussing. Okay, we people have already discussed the process of nitrogen fixation, right? Okay, and weathering of rocks. तो ये बात करी हमने input की. Now let's talk about output of nutrients. Okay, if I am talking about आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आउटपुट का मतलब होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट. आउटपुट का मतलब क्या होता है? इट इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इकोसिस्टम. इट इज loss of nutrient from an ecosystem. Am I clear? And this may occurs due to runoff water. Okay. So what I am writing over here, runoff water. इसके साथ साथ से फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम कौन सा चला जाए, आपका
calcium, let me write in another pen, okay, so that will be very clear to you people. पानी के साथ साथ कौन से न्यूट्रिएंट डिप्लीट होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ओके. Loss of nutrient may occurs due to soil erosion, then by the process called as denitrification, okay, where the nitrogen which is present in soil gets converted into nitrogen, N2, N मतलब वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. Am I clear? Okay, nitrites and nitrate with the help of your denitrifying bacteria वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इट मे अकर्स, लॉस मे अकर्स ड्यू टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. इट मे अकर्स ड्यू टू हार्वेस्टिंग ऑफ crops. So runoff water, soil erosion, denitrification, harvesting of crops, yes, due to grazing and many more. This can be the reason for loss of nutrients. Okay dear students, if I am talking about an undisturbed ecosystem, मतलब ecosystem stable है. ecosystem क्या है? stable है. In that case input and output में बैलेंस होता है. क्या होता है? बैलेंस होता है. However, this ecosystem, if disturbed due to any reason like soil erosion or harvesting or fire, then nutrient cycling में unbalance create हो जाएगा, which ultimately makes an ecosystem unstable. Am I clear? Okay, so this is your output of nutrient. Now let's discuss your internal nutrient cycling. Third component क्या है आपका? It's an internal nutrient cycling. ठीक है, चलो. If I am talking about an internal nutrient cycling, then I am talking about, चलो, say for example if I am talking about soil. If I am talking about soil, तो soil is continuously being depleted of nutrients. ये तो आपको अच्छे से पता है, राइट? क्यों? क्योंकि यहां से कौन एब्जॉर्ब करता है? Soil is being continuously depleted of nutrient as nutrients are absorbed by plants, and from plants the part which is absorbed goes to consumer. It goes to consumer. Dear students, अब ये जो nutrients है जो plants में चले गए, जो consumers में चले गए, वो वापस soil में कैसे आएंगे? Replenishment of soil nutrient is very necessary. What I am saying, जो nutrient soil में से जाए उसका वापस आना उतना ही जरूरी होता है. So what I am saying, replenishment of soil nutrient is essential. अब ये कैसे आए? So replenishment of soil nutrient occurs. Okay, so what I am writing, replenishment, here I am writing, of soil nutrients, okay, that may occurs due to your above ground detritus, है ना, or it can be your below ground detritus. What is this? ये आपको अच्छे से पता है, right? And from this detritus, by the activity of decomposer, आपके जो nutrients है, they are released back to soil. They are released back to soil. Am I clear? Okay dear students, if I am talking about an stable ecosystem, अगर ecosystem stable है तो ये एकदम perfect balance में चलता है. Nutrient cycling, right, uptake intake वो balance में चलता है. I mean to say uptake of nutrient is equal to internal nutrient cycling, वो equal होता है. But whereas if I am talking about your young growing ecosystem, if I am talking about young growing ecosystem, तो वहां पे nutrient uptake ज्यादा होता है in comparison to cycling.
in comparison to cycling. Nutrient uptake ज्यादा है तो these nutrients are retained in biomass, है ना. न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा है तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं. दिस न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन, आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेंस योर बायोमास. एम आई क्लियर? सो हियर आई एम राइटिंग वन फॉर्मूला. रिटेंशन इज इक्वल टू, रिटेंशन इज इक्वल टू अपटेक माइनस रिसाइकल, है ना. अपटेक कितना हुआ है, रिसाइकल कितना हुआ है. ये फॉर्मूला से पता चले कि न्यूट्रिएंट्स रिटेन कितने हुए हैं. सिंपल सी बात है. ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट अपटेक एंड रिसाइकलिंग आर बैलेंस्ड. बट इन यंग ग्रोइंग इकोसिस्टम अपटेक ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिसाइकलिंग. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिटेन होते हैं इन प्लांट बायोमास, इन फॉर्म ऑफ प्लांट बायोमास. एम आई क्लियर? एंड दिस इज अ फॉर्मूला. रिटेंशन इज इक्वल टू अपटेक माइनस रिसाइकल. एम आई क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. जस्ट टू ब्रीफ इट आउट, यहाँ पे आपकी सॉइल, राइट. सॉइल में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, right, by whom? By plants. Then it is being taken up to animals, right? Okay, यहां से ये जो है, okay, and ये जो है वो क्या आएगा यहाँ पे आपका recycle. Okay, this will be your recycle. Am I clear? Okay, let me draw the outline. सो दिस इज एन इकोसिस्टम. बच्चों ये क्या ड्रॉ करा है मैंने, इकोसिस्टम. रादर देन एनिमल आई शुड राइट कंज्यूमर. ओके, these are producers and simply these are your consumer. So here I am writing your consumer. Okay, what I have drawn this thing is your ecosystem. ये ecosystem है, ठीक है. यहां से रिसाइकल, यहां से रिसाइकल. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक इनपुट. यहां से एटमॉस्फेरिक इनपुट स्टोर होता है, राइट. देन वेदरिंग इनपुट, है ना, वेदरिंग इनपुट स्टोर होता है. गैसियस आउटपुट, जो निकलता है वो क्या निकलता है, गैसेस, गैसियस आउटपुट. एम आई क्लियर? एंड वन मोर इज योर इकोनॉमिक आउटपुट. व्हाट इज दैट? दैट इज योर इकोनॉमिक आउटपुट. एम आई क्लियर? सो दिस इज अ डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ after completing this thing. So it's an schematic diagram that represents nutrient cycling. जो क्या represent करती है, nutrient cycling. So give a heading, schematic diagram representing nutrient cycling in ecosystem. ठीक है. So dear students, ये क्या पढ़ा हमने, components of nutrient cycle. I hope this is very clear to you people. Thank you very much.